Assalamu alaikum everyone. My name is Ani Jamil and I am here to welcome you all on behalf of NPAS. आप में से कई लोग पहली दफ़ा NPAS के इसी सेशन में शिरकत कर रहे होंगे. So for those of you, I'd like to give a slight intro about NPAS. NUST Physics and Astronomy Society is basically a society of NUST for all the physics enthusiasts out there. We've been inspiring students to our talks and sessions in which we invite some of the renowned scientists to share their knowledge and experience with us. Recently, NPAS held a series of talks and sessions like A Journey Through Time and Nature of Physical Laws. Our guest for today's session is Taha Nasir, a final year physics student at SNS NUST, who will deliver a talk regarding his final year project on radio-enhancement using gold nanoparticles and its application to radiotherapy for cancer treatment, which is being supervised by Dr. Fahim Amin, an associate professor at SNS. Till now, no other student at SNS has done a project in medical physics, so Taha is the first one. Before passing it on to Taha, I'd like to tell the audience that throughout the session, you can type your questions in the chat box and they will be answered later on by Taha. So over to you, Taha. आपकी आवाज़ नहीं आ रही था भाई. वीडियो आपकी शेयर हो रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल. Now you're audible. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. I'm Taha Nasir. मेरा इंट्रो तो अनीक दे चुके हैं, so I will start with the talk without any further ado. I'll share my presentations just in a second. All right, G. So radio enhancement using gold nanoparticles and its application in radiotherapy for treating cancer. This is my final year project. Dr. Fahim Amin has been supervising this project for almost a year now, और काफ़ी progress वगैरह अच्छी हुई है. And the main purpose of this talk, however, is to introduce this topic to everyone and to also talk about some of the very basic fundamentals of physics which are involved in healthcare. ये एक ऐसी field है जिसके बारे में not a lot of people know of, and probably that is why it is not very common. तो I hope कि यहाँ से लोग कुछ inspiration लें और maybe उनको एक नए career path का पता चले which they can adopt later on. So the structure of my presentation is going to be as such. I am going to start with the biological background. I'll cover the principles of radiotherapy, then talk about what radio enhancement is, and then tell you about some of the experimental work that I have done. Biological background से start करने का basic मकसद ये है कि I suppose most of the audience that we have today वो फिजिक्स के बैकग्राउंड से होगी, या एटलीस्ट एक एक्सटेंसिव किस्म का बायोलॉजिकल बैकग्राउंड उनका जो है ना वो नहीं डेवलप्ड होगा. तो we'll start off and then we'll see where things take us. जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि I think needs to be answered before we can talk about anything else is that what is cancer? Well, in simplest of terms, किसी भी सेल डिवीजन साइकिल के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाए जिसकी वजह से एक सेल अनकंट्रोलेबली अपने आप को डिवाइड करता रहे और ग्रो कर जाए, वो ट्यूमर कहलाता है. उसको कैंसर से भी लोग तशबीह देते हैं. और इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये इर्द गिर्द के सेल्स इन्वेड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ उनका न्यूट्रिशन ले सकता है, उनके जो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं उनकी जगह अपने आप को प्लेस कर देता है.
and this causes all of the complications that come with cancer. एक fundamental question ये है कि कैंसर और ट्यूमर में फर्क क्या है? तो कोई भी अनवांटेड मास हो जो किसी भी किस्म की, जैसे मैंने बताया कि सेल साइकिल की abnormality होती है, उसकी वजह से कोई भी अनवांटेड मास डेवलप हो जाए, you can call it tumor. It is in the simplest of terms, tumor is that. अब ट्यूमर की आगे दो टाइप्स होती हैं, one is malignant and one is benign. Malignant tumors are cancerous. So these are the ones which can actually invade nearby cells. These are the ones which can spread to other parts of the body. इस phenomena को cancer metastasis भी बोलते हैं. Benign tumors जो होते हैं, these are harmless masses. They can only cause problems when they are located somewhere inside of a vital organ, because तब फिर ऐसे होता है कि they can grow and press on to nearby blood vessels, or this can cause a lot of problems. Or उस केस में these tumors can just be removed, the benign tumors, and they can, you know, just be removed, and जो normal activity है या normal organ functionality है वो restore हो जाती है. So there are four main types of cancer treatment. आप में से majority ने सुना होगा इनके बारे में. I will give a brief introduction to all of these. So we'll start by discussing chemotherapy. Chemotherapy is probably the most commonly heard treatment type for cancer. इसके अंदर होता कुछ ऐसे है कि आप काफ़ी पावरफुल केमिकल्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिनका काम होता है सेल डिवीजन रोकना. तो जो नॉर्मल सेल डिवीजन, well, cell division is a normal characteristic of all cells in the human body, but chemotherapy उस सेल डिवीजन को टारगेट करती है और it inhibits that. Well, obviously जहाँ पर आपके कैंसर सेल्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है वहाँ आपके हेल्दी सेल्स की ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है. So it comes with it brings with itself a lot of side effects, और वो evident भी होते हैं, जिस तरह कैंसर पेशेंट्स lose their hair और इस किस्म की चीजें हैं. Most of these things come as a result of chemotherapy. Well, next is immunotherapy. Immunotherapy is basically एक जीन थेरेपी की टाइप है जिसमें आप इम्यून सिस्टम को टेलर करते हैं in a way that it now treats cancer cells as antigens. Well, कैंसर सेल्स के ऊपर एंटीजेंस को होती भी हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. तो immunotherapy ensures that your body starts producing antibodies which can act against those cancer cells or those tumor cells, and it is like that a cancer cell is damaged. Immunotherapy की अगर हम बात करें तो. Then we obviously have surgery. अगर कोई cancer cell, कोई tumor होता है कहीं पर located which is malignant, well, that is how we classify it as cancer. तो उसको आप surgically invasively जाकर remove करते हैं, और usually इनमें से खैर कोई भी ट्रीटमेंट टाइप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती. यू ऑलवेज, अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो उसको आपको कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में से किसी एक के साथ सप्लीमेंट करना होता है. और रेडियोथेरेपी इज द फोर्थ ट्रीटमेंट टाइप, and this is what we are going to talk about in a little more detail. लेकिन all cancer treatments, they take place as a combination of these treatment methods. कोई एक sufficient method नहीं है, self sufficient method नहीं है cancer treat करने का. एक statistic है जी कि almost 50% of all cancer patients go through radiotherapy at some stage during their treatment, which is one of the primary reasons why radiotherapy attracts a lot of scientific research. और लोग काफ़ी देर से लगे हुए हैं कि radiotherapy के effects को enhance किया जाए, side effects minimum हो, tumor damage, cancer damage maximum हो. and इसके अंदर 20 fields हैं जो कि involved हैं. Biology और physics तो explicitly involved हैं. Biology में cancer nanotechnology, cancer biology, the radiotherapy physics की side पर nanotechnology in itself.
So all of this is to ensure कि जी आप किसी ना किसी तरह किसी भी treatment method के side effects minimize करें और effectiveness उसकी आप increase करें. So we'll move on to radiotherapy and we will talk about what it is और क्या what is so special about it which makes sure कि आपका tumor या cell damage होता है, उसे cancer cell damage होता है. We'll start with the basic question that how does radiation damage cells? So basically, it is a simple phenomena. जो radiation होती है, it brings with itself a lot of energy. जब body वो energy absorb करती है, तो on a cellular level, rather on an atomic level, ये जो radiations होती हैं, ये जो energy लेकर आ रही होती हैं, this energy gets absorbed by the electrons of that atom. अगर ये एनर्जी एक खास लेवल की है, एक खास वैल्यू की है, आपका इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेट इजेक्टेड फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर. दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज अ लोकल आयनाइजेशन. आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस एरिया के अंदर. Now this ionization is what is basic principle behind all of the DNA damage, the cancer cell damage. और वो होता इस तरह से है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास वो या तो themselves अटैक करते हैं डीएनए के ऊपर या वो वाटर रेडियोलिसिस परफॉर्म कर देते हैं उस डीएनए जो कैंसर सेल का डीएनए है उसकी सराउंडिंग्स में. रेडियोलिसिस के नतीजे में वी गेट an OH negative ion and this OH negative ion now can attack और वो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डैमेज कर सकता है. All right. So ये जो डायग्राम है इसको देखकर आप लोग देख सकते हैं इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज और डायरेक्ट डीएनए डैमेज में फर्क है. डायरेक्ट डीएनए डैमेज में जो रेडिएशन है इट इज गोइंग टू नॉक दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डैमेज द डीएनए स्ट्रैंड. In an indirect DNA damage, the photon knocks this electron off, which performs radiolysis of the water, जो कि water ionization होती है. और अब ये जो OH negative ion है ये either well, this chemically can damage जो आपका DNA strand है उसको. This forms basically the principle जिसकी वजह से आपकी radiation एक damage कर रही होती है. All right. So अब having said all of this, a point that most of you must have noticed by now is कि I did make reference to cancer cells, लेकिन जो कुछ एक कैंसर सेल के साथ होता है वही कुछ एक हेल्दी सेल के साथ भी हो सकता है. तो रेडियोलिसिस वाटर का उस नॉर्मल सेल के डीएनए स्ट्रैंड्स को भी डैमेज कर सकता है. उसकी भी एबिलिटी टू ग्रो इनहिबिट हो सकती है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हेल्दी सेल्स ग्रो ना कर पाए अच्छे से तो दैट ब्रिंग्स विद इटसेल्फ अ टन ऑफ साइड इफेक्ट्स. सो मतलब what is the rationale, what is the reason why radiotherapy is so successful? अगर मैं एक ट्यूमर को टारगेट कर रहा हूँ और वो ट्यूमर श्रिंक कर रहा है तो इसका ये भी मतलब है कि उस ट्यूमर को टारगेट करते हुए जहाँ जहाँ हेल्दी सेल्स ने irradiation एक्सपीरियंस की है on all of those places these healthy cells are going to get damaged. और God forbid कोई ट्यूमर किसी strategic सी पोजीशन में located हो where it is shielded by a few vital organs, those organs are going to get heavily damaged. Organ repair काम ही सेल डिवीजन पर प्रिंसिपल है, काम ही सेल डिवीजन पर करता है. तो रेडियोथेरेपी जब मैं करता हूं तो क्या ऐसा खास है जो कि इसको एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट बनाती है, क्योंकि अगर हेल्दी सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो. वेल, एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कि इस तमाम चीज को आंसर करता है और वो ये है कि well there are two things. एक तो instinctively जो ट्यूमर सेल है उसका response to radiations is better than better से मुराद ये है कि it gets more damaged as compared to a healthy cell. ये तो एक fact है. दूसरा ये है कि एक ट्यूमर सेल जो है और एक हेल्दी सेल जो है ये एक दूसरे से in terms of their cell cycle differ करते हैं. differ किस तरह से करते हैं? well एक ट्यूमर सेल जो होता है उसका मेन पर्पस इज टू ग्रो, सो इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स साइकिल
in that specific phase जिसके अंदर एक सेल अपने आप को replicate करता है. जबकि सेल रिपेयर करना और ये तमाम चीज़ें भी एक नॉर्मल सेल साइकिल का हिस्सा होती हैं, जो कि दूसरे सेल्स तो अपने आप को अगर कोई ना कोई उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आए तो दे हैव दिस एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स. अगर वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते तो देयर इज समथिंग नोन एज सेल अपोप्टोसिस व्हिच टेक्स प्लेस, व्हिच इज बेसिकली वो सेल सुसाइड कर लेता है सो दैट अगर कोई भी उसके डीएनए स्ट्रक्चर में, जीन स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है तो वो रेप्लिकेट ना हो. लेकिन ट्यूमर सेल का ये काम ही नहीं है. ट्यूमर सेल का तो काम है इसने सिर्फ रेप्लिकेट करना है अपने आप को, इसने सिर्फ ग्रो करना है. It does not identify एक तो in the first place कि उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, और अगर वो कर भी ले तो it does not possess the ability to undergo apoptosis. It keeps on going on and on and on, and this is what spreads the cancer at a very fast rate. अब ये जो 2 points discussed हैं, how do we use these points to our advantage and ensure कि मेरे ट्यूमर सेल्स का डैमेज और मेरे हेल्दी सेल्स का डैमेज एटलीस्ट बराबर नहीं है? Well, मैं ये करता हूँ कि कोई भी डोज which I know is needed for a tumor to shrink or get completely damaged, मैं उस डोज को यकदम नहीं देता, इकट्ठे नहीं देता. और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर एक ट्यूमर वॉल्यूम ने डैमेज होना है इस इंटेंसिटी की डोज से, तो उसके इर्द गिर्द उसी वॉल्यूम में मौजूद अगर कोई वाइटल ऑर्गन है, कोई हेल्दी टिश्यूज हैं, तो वो भी कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगे. एंड दैट इज समथिंग दैट आई डू नॉट वांट, क्योंकि आई नेवर वांट एनीथिंग इन माय बॉडी टू बी डेड, कंप्लीटली डेड. मतलब ये एक बहुत अनफीजिबल सा सिचुएशन है. तो व्हाट इज डन इज कि जो ये डोज है इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रैक्शंस. वेल, एक डोज जो होती है इट इज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी, और उसका जो यूनिट होता है जिसमें उसको मेजर किया जाता है दैट इज ग्रे, GRAY. ग्रे जो होता है वो बेसिकली एनर्जी डिपॉजिटेड इन अ मास पर यूनिट किलोग्राम होता है. तो अब मैंने अगर एक ट्यूमर को कंप्लीटली डैमेज करने के लिए 20 gray required है for instance, so what I do is I divide them into 2 gray के 10 sessions. तो एक रेडियोथेरेपी सेशन जो होगा उसके अंदर मैं सिर्फ 2 gray डिपॉजिट करूंगा, अगले के अंदर फिर मैं 2 gray मजीद, और I'll complete all of the 10 sessions. इसलिए रेडियोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो सेशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इनको जो डोज की स्मॉलर फ्रैक्शंस होती हैं, डोज की जो स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं उनको फ्रैक्शंस बोला जाता है. और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है थेरेप्यूटिक विंडो का. तो थेरेप्यूटिक विंडो इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इस diagram से. Now when we look at this diagram we can see, okay, I found this. I'm sorry, एक second ये. No need to apologize. I am sorry. अच्छा जी, so अब एक important चीज जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की वो थी therapeutic window. Now what is this therapeutic window? This therapeutic window is this gap in this graph, and I'm going to explain where this gap comes from. मैंने डिस्कस करते हुए पहले ही बताया कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं they respond positively, they respond better to radiation, which means कि एक कम डोज के ऊपर मेरे पास वही इफेक्ट्स एक ट्यूमर सेल में ऑब्जर्व हो जाते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स में एट अ हायर डोज होते हैं, which is nice. Why? Because now when I have a lower dose, मेरी tumor control probability, which is shown by this red curve, is going to lie towards the left, and my normal tissue complication probability is going to lie
the same graph is going to lie at a relatively higher dose. What does that mean? Well, that means कि अब मेरे पास एक ये गैप आ गया है और अगर मैं इस गैप के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट डोज अपनी फिक्स करता हूँ तो for the same dose I will have a higher cure probability and a lower normal tissue complication probability. और यही हम चाहते हैं कि हमारे हेल्दी सेल्स कम से कम डैमेज हो और हमारे जो ट्यूमर सेल्स हैं उनका मैक्सिमम डैमेज हो. और यूजुअली जो भी आपकी डोज होती है वो इसी विंडो के अंदर फिक्स्ड होती है. वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर हो भी गया कोई फॉर इंस्टेंस तो I will talk about this video that I have found talks about the device design जो कि यूज होती है रेडियोथेरेपी परफॉर्म करने में. इस डिवाइस को लीनियर एक्सेलरेटर कहा जाता है और लिनैक भी कहा जाता है और ये काफ़ी हाई टेक किस्म की चीज़ है और इसका डिज़ाइन और जो फंक्शन है वो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती है. तो लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट. अनीक, if you could confirm कि आपको वॉल्यूम इसका ये कंप्यूटर ऑडियो सुनाई दे रहा है या नहीं, वरना फिर मैं सेटिंग्स देखता हूँ. नहीं, आवाज़ नहीं आई. अच्छा, एक सेकंड, फिर मैं इसको फिक्स करता हूँ. How the linear accelerator works. Can you please confirm? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है. चलो. All body cells can be damaged or killed by radiation, but tumor cells are more sensitive to radiation than normal cells. Radiation therapy uses this principle to damage beyond repair or kill the abnormal cancer cells in a tumor. Successful radiation therapy depends on the ability of the linear accelerator, or LINAC, to deliver a tumoricidal dose of radiation to the tumor, while ensuring minimal radiation of normal tissue. The LINAC accurately produces, monitors, controls, and conforms the radiation beam to the planned target. Beam generation. Radio frequency waves are pulsed into the waveguide by the magnetron. This is synchronized with the injection of electrons into the waveguide by the electron gun. The radio frequency waves accelerate the electrons along the waveguide to a speed approaching the speed of light. The X-ray beam is created when the electrons hit and interact with a tungsten target at the opposite end. The magnetron controls the power and frequency of the radio frequency waves, which determine the energy of the X-rays produced. The digital accelerator uses a diode-type electron gun situated at the end of the waveguide. The electrons are produced by heating the tungsten filament within the cathode and are then injected into the waveguide. The number of electrons injected is controlled by the temperature of the filament. The electrons are accelerated along the waveguide toward the target. The waveguide contains a series of copper cells. Small holes, or irises, between these copper cells allow the electrons to travel along the waveguide and help to focus the beam. A vacuum is created to ensure that the electron beam is not impeded by other particles. The path of the negatively charged electron beam is controlled by two sets of quadrupole magnets, called steering coils, that surround the waveguide. An additional two sets of focusing coils help to further define the electron beam so that it is very fine, with a diameter similar to that of a pinhead when it hits the target.
The entire system is cooled by water. The electrons exit the waveguide and enter the flight tube, where the beam is redirected towards the target. The electrons travel along a slalom path within the flight tube. 3 pairs of magnets on either side of the flight tube cause the electron beam to bend through the turns of the slalom. This process not only positions the beam to strike the target, but it also further focuses the beam to a diameter of 1 millimeter. The design of the magnets enables them to focus electrons of slightly different energies onto the same point on the target. This is called achromatic behavior. This slalom bending is unique to electrolinear accelerators. It helps to minimize the size of the machine and ensures that its isocenter remains low, which is important for patient setup. The high-energy electrons hit a small tungsten target where the electron energy is converted into photons, or X-rays. The high-energy photons emerge from the target in a variety of directions. The primary collimator only allows forward-traveling X-rays to pass through, creating a cone-shaped beam. The primary collimator minimizes leakage and therefore excess total body dose by absorbing scattered X-rays traveling in the lateral direction. It also defines the maximum size of the resulting clinical radiation beam. At this stage, the photons are not uniformly distributed across the beam, and so a flattening filter is placed in the path of the beam. The cone-shaped filter absorbs more photons from the center of the beam than from the sides, creating a uniform photon beam. Acha ji. So I hope the video itself wasn't boring. Anik, can you hear me? Yes, you're audible. हाँ जी. तो इस वीडियो के अंदर काफी चीजें आपने नोटिस की होंगी. I mean, काफी heavy किस्म की physics involved है और physicists who work in a medical physics की facility या किसी industry में जो कि ये devices बनाती है, उनका major काम is to keep this machine calibrated, इसकी precision ensure करना. It is a whole science in itself और इसलिए और ये काफी physical और mathematical in nature है सारा काम करना. That is one of the reasons why physicists की cancer treatment के अंदर demand बहुत ज़्यादा इस area और इस sector के अंदर भी है. अब ये Electa company है, ELEKTA probably, yes. और इनकी और भी videos हैं, so if someone is interested they can just go to YouTube और वो ये YouTube videos देख सकता है. We will move on and we will now talk about कि चलो radiations तो in the video we saw कि बन गई, uniform भी हो गई, एक window भी बन गई जिसके through उन्होंने body में जाना है. How do these radiations interact with the body? होता क्या है? यहाँ पर आते हैं कुछ important physical phenomena. I am sure इनमें से at least कुछ तो सारों ने देखे होंगे, कुछ जो हैं वो शायद किसी ने ना देखे हों, but I'll tell कि क्या क्या है. Anyway, firstly we have Compton scattering. तो जब कोई भी photon body में Compton scattering essentially is that a photon gets scattered by a charged particle, ठीक है ना. तो बॉडी के अंदर जब ये एक्स-रे फोटोन आता है तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है. हिट करने के रिजल्ट में वो इलेक्ट्रॉन जो नॉक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन इस फोटोन के पास एक एक्सेस एनर्जी होती है. तो इस फोटोन के नतीजे में अब मेरे पास एक और फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कोई फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया और उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया. फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी की तरफ चलेगी. Then we have kinetic energy plus whatever energy was needed for that electron to get removed.
फिर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन आ जाती है। इस केस के अंदर जो पेयर प्रोडक्शन है वो जो फोटोन है उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है। एंड देन वी हैव दिस थिंग नोन एज ब्रेमस्ट्रालंग, एंड आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उनके पास एक सर्टेन एनर्जी होती है और वो मूव अराउंड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर फॉर एनी रीजन ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत एकदम से रुक जाएं या एकदम से अपनी एनर्जी लूज करें, तो उसके रिजल्ट में एक फोटोन जनरेट होता है। दैट फोटोन, well, this phenomenon is known as Bremsstrahlung, and we'll actually see how these things take place inside of a body. तो मतलब ऐसा है क्या जो हो रहा है? As well, we'll talk, और इस चीज को हम डोज डेपोजिशन कहते हैं। We'll first talk about the X-ray therapy, जिसके अंदर इंसिडेंट फोटॉन्स होते हैं। अब we have a schematic where we only have one X-ray photon coming in. वो फोटोन आया, सिंगल फोटोन, उसने बेसिक कॉम्पटन स्कैटरिंग की। I have a photon and an electron. This electron is high in energy, so किसी भी रीजन की वजह से कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, कुछ इस तरह आ गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड एकदम से अपने आप को स्लो डाउन करेगा। The electron is going to remain there as it is with the lower energy, but I will also have a photon getting generated. अगर हम इसकी दूसरी ब्रांच देखते हैं तो ये फोटोन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, we have pair production type of a thing going on, and we can see that in every step we either have a photon getting generated or an electron getting generated, which is going to move on and do the similar kind of a thing which has happened here and here. So ये एक series of series of ionization tracks trigger हो जाता है, which only starts with, well, in this case a single photon, or in an actual case कुछ हजार लाख या whatever unit you want to give, उतने photons incident होंगे और उनसे कई ज्यादा ionization tracks और electrons और photons की generation होगी in a certain depth inside of the human body, which I'll talk about इस graph के through. So initially, until here, we had a dose buildup going on. What does that mean? एक photon आया, एक electron है, एक extra photon है. So one photon resulted in two potential things which could cause more ionizations. So that is what this dose buildup is. ये body की बड़ी कम डेप्थ के अंदर ऐसा होता जाता है। इट्स अ फ्यू सेंटीमीटर। जो एक नॉर्मल जो पाकिस्तान में खासतौर पे कोबाल्ट सोर्स वाले रेडियोथेरेपी लिनक्स यूज होते हैं, उनकी एक टिपिकल डेप्थ होती है 1.2 सेंटीमीटर। तो वहां पर पीक डोज मिलती है, जिस तरह यहाँ पर भी इन्होंने शो किया है कि कुछ मिलीमीटर्स पर मिलती है। अब इस डोज ने बिल्ड किया और इस पॉइंट तक आ गई कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयनाइजेशन ट्रैक्स अवेलेबल थे, या ऐसी लोकेशंस अवेलेबल थी जहां पर आयनाइजेशन हुई भी थी या वो पोटेंशियल रखनी थी आयनाइजेशन होने का। Now these electrons and photons are obviously, as we are moving along, they're losing energy. So now they do not possess enough energy कि वो मज़ीद ionizations कर सकें. So we can then see after a certain depth that this ionization, this dose buildup basically falls. ये तो केस था X-ray therapy का. Now we're going to talk about electron beam therapy. So this is another type of रेडियोथेरेपी जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं एक बॉडी के ऊपर, और उसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि हमने डिस्कस किया था किस तरह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन टारगेट को इवेंचुअली हिट करते हैं जो फोटॉन जनरेट करता है, उसके अंदर बस टंगस्टन टारगेट उस तरह से नहीं होता। सो वी ओनली हैव इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बाय द वे कम होती है। ना जब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी यूज कर रहा हूँ तो मैं एक इलेक्ट्रॉन का डोज सरफेस के ऊपर दे रहा हूँ ना। पहले मैंने देखा था कि मैं सरफेस के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा डोज दे रहा था और डेप्थ्स के अंदर काफी ज्यादा डोज इकट्ठा हो रहा था। यहाँ पर ऐसे नहीं होता, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव
इनफ एनर्जी कि वो इतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और उससे ज़्यादा फोटॉन्स वगैरह को किसी तरह से generate करें inside of the body. So these electrons are at a lower energy. The full dose is provided at the body, और as we move along, मेरे पास dose कम होती जाती है until it comes to a very negligible value. क्योंकि इस type of radiotherapy के अंदर मैं full dose दे रहा हूँ surface के ऊपर, ये electron beam therapy is usually used to treat cancers in the skin या बिल्कुल skin के नीचे कोई tumor accumulate हुआ है, मैं ये use कर लेता हूँ because obviously इसके damaging effects उतने ज़्यादा शायद नहीं हैं जितने normal X-ray therapy के हैं. ये तो तमाम बातें होगी principles की, radiotherapy के damage किस तरह होता है, device क्या होती है, biological sense क्या है इन तमाम चीज़ों की. Now we'll move on to what I have done as अपने project के अंदर, and it isn't कि मैंने कोई नया काम किया है, मैंने ये radio enhancement पे बहुत aggressively काम हो रहा है, and you will understand why, because इसके जो results हैं वो बहुत ज़्यादा amplified हैं और बहुत ज़्यादा advantageous हैं. So we'll see what radio enhancement is, and I'm sure अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ये एक बड़ी interesting field है और क्यों इस पर इतना काम हो रहा है. So radio enhancement का basic rationale क्या है? Basic rationale ये है जी कि हमने ये तो establish कर ली है बात that higher dose means more damage. This is an established thing. जितनी ज़्यादा dose होगी उतना ज़्यादा damage होगा. किसको होता है, we can't really tailor that, isn't it? तो हम लोग कहते हैं जी कि अगर मेरी ज़्यादा डोज होगी मेरा हेल्दी सेल भी डैमेज होगा, मेरी ज़्यादा डोज होगी मेरा कैंसर सेल भी डैमेज होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आल्सो डिस्कस्ड. अगर एक किसी आइडियल वर्ल्ड के अंदर हमें एक ऐसा सिनेरियो मिल जाए जहां पर वी हैव initial dose is less, but the dose that is received at the tumor site is enhanced. तो क्या ही अच्छा हो? Because now healthy cells are going to get spared because they are going to experience a relatively lower dose. जो tumor cells हैं वो एक enhanced dose लेंगे. तो we can see how this could be an ideal scenario. और उसकी वजह यही है कि मेरे पास जो ट्यूमर साइट है उसमें या उसके अराउंड ज़्यादा आयनाइजेशंस होंगी. एंड वी ऑलरेडी सेड कि जी हेल्दी सेल्स का जो एक्सपोजर है रेडिएशंस पर वो लिमिटेड होगा. दिस कैन लीड टू अ रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट डोज इन द फर्स्ट प्लेस, और फिर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स भी कम हो गए बिकॉज नाउ ऑब्वियसली मैंने अपने ट्यूमर को जल्दी डैमेज किया है और मेरे हेल्दी सेल्स उस तरह से डैमेज नहीं हुए. How is radio enhancement done? क्या है ये सारा मामला? जो हाई एटॉमिक नंबर के नैनो पार्टिकल्स हैं वो रेडियो एनहांसमेंट के लिए यूज होते हैं. और बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि जो एक हाई एटॉमिक नंबर का मटेरियल है इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स विसिनिटी. उससे होता क्या है, उससे बड़ी सिंपल सी बात है. अब फॉर इंस्टेंस मेरी बॉडी के अंदर जब रेडिएशन आती है तो इट गेट्स टू इंटरैक्ट विद अ सिस्टम जिसकी अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक नंबर जिसका है 7.5. मेरी बॉडी में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तमाम का देखें तो एवरेज आउट अगर आप इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरी बॉडी के अंदर उस हिसाब से देखें तो जो एवरेज एटॉमिक नंबर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 है. अब अंदाजन मेरे पास 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैं, दे आर गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. उनको रिमूव करने के लिए आई नीड अ हायर एनर्जी व्हिच इन टर्न मींस दैट आई नीड अ हायर इनिशियल रेडिएशन. हाउएवर अगर मैं बात करूं
एक हाई जी नैनो पार्टिकल की या हाई एटॉमिक नंबर नैनो पार्टिकल की या मटेरियल की, और एग्जांपल लूं गोल्ड की, गोल्ड का एटॉमिक नंबर is 79, lots of electrons available, most of them are also shielded from the attraction of your nucleus, so I will need a much lower initial dose which is going to make sure कि मेरे पास बहुत अच्छी किस्म की आयनाइजेशन हो रही है और बहुत अच्छे किस्म के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। गोल्ड का यही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गोल्ड का जो मास एनर्जी कोफिशिएंट है वो हायर है, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स मोर टू रेडिएशन देन अ नॉर्मल देन एनी अदर मटेरियल, लो जी मटेरियल बेसिकली। जो गोल्ड यूज करने की सारे सिनेरियो के अंदर मजीद इम्पोर्टेंस है वो ये है कि उसकी साइटोटॉक्सिसिटी लो होती है। साइटोटॉक्सिसिटी इज द मेजर ऑफ how your body reacts to any foreign particles। अगर मेरे पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो आ रहा है और बॉडी के अंदर सेल डेथ कॉज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि उसकी साइटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। गोल्ड की साइटोटॉक्सिसिटी कम है। इट इज बिकॉज ऑफ एक तो how your biology responds to it, दूसरा ये इनर्ट है तो ये अपने आप को केमिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता चीजों के साथ, और उसकी के नतीजे में ये cell death नहीं cause करता। It can coexist in a system of live cells. Now, this diagram basically tells everything that's going on. अगर हम देखें, imagine that we didn't have this gold nanoparticle here. उस केस के अंदर जो भी एक्स-रेज थी, उन्होंने ये जो वाटर हमें बहुत सारा नजर आ रहा है इन द सराउंडिंग, उसको रेडियोलिसिस करना था। उसके रेडियोलिसिस के नतीजे में मेरे पास charged radicals बन जाने थे, which are represented by these blue spheres. These charged radicals would have then attacked the DNA strand, और उसके अंदर जो है strands break करता, जिसकी वजह से मेरा DNA डैमेज हो जाता और अब वो शायद ग्रो ना कर पाता। लेकिन गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स डालने के बाद हम देख सकते हैं कि सेम एक्स-रेज ने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती हैं। क्यों? We've already discussed. अब इन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मसला तो डोज का था। ये नैनो पार्टिकल क्योंकि क्लोजर टू द डीएनए था या क्लोजर टू द कैंसर सेल था, इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, now they can aggressively damage this DNA। और अगर हम किसी और जगह पर बॉडी में सराउंडिंग्स में देखें जहां पर गोल्ड का नैनो पार्टिकल नहीं है, तो काफी कम जनरेशन है रेडिकल्स की, जो बेसिकली OH नेगेटिव रेडिकल है। और well, we have a win-win situation. We do not have a higher dose anywhere else but where आपका जो कैंसर सेल है वो मौजूद है। ये टिपिकल केस है जिसके अंदर हम एक 3 नैनोमीटर का गोल्ड नैनो पार्टिकल यूज करते हैं और 100 किलो वोल्ट्स का जो पोटेंशियल होता है वो उसको देते हैं। This basically summarizes all of what is important radio enhancement के अंदर। इसके बाद क्विकली कुछ एक्सपेरिमेंटल काम जो मुझे करने को मिला और जो मैंने देखा और सीखा वो मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो फिनोमेना है और जो प्रिंसिपल्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड देम अभी तक। We'll start with the synthesis and functionalization of our nanoparticles. तो जी एक चीज एक मेथड होता है नैनो पार्टिकल्स बनाने का जिसको साइट्रेट रिडक्शन बोलते हैं। तो हम गोल्ड का कोई सॉल्ट लेते हैं और एक उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं which contain जो साइट्रेट रिडक्शन जो सिट्रिक पार्ट होता है उसका एक। कोई भी नैनो पार्टिकल बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। एक होती है प्रिकर्सर which is going to be our gold salt, reducing agent which is whatever the citrate solution we have, and we also have a capping agent। So जब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करता हूँ, स्टर करता हूँ, तो मेरे पास गोल्ड के पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बट आई डोंट वांट दोज पार्टिकल्स टू न्यूक्लिएट, विच मीन्स के एक न्यूक्लियस के अराउंड उस पार्टिकल को मैं ग्रो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली नैनो पार्टिकल्स के तौर पर ग्रो करें।
तो वो कैपिंग एजेंट्स यूज करते हैं हम इस काम के लिए, तो आप एक सूटेबल कैपिंग एजेंट यूज करें और साइट्रेट रिडक्शन करें गोल्ड सॉल्ट की, तो यू विल गेट गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। इसके प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं, यूजुअली उन्हीं को देखकर किया जाता है और मैंने भी ऐसे ही किया। I did something extra though. I coated these nanoparticles with polyethylene glycol. And how did I do it? मैंने अपना synthesis perform ही एक organic solvent के अंदर किया जो कि PEG ही था। मैंने ऐसा क्यों किया, कोट क्यों किया? Basically, polyethylene glycol is a polymer. When I am going to coat a polymer around my spherical nanoparticle, वो एक तरह से छुप जाएगा और आपकी बॉडी में जब जाएगा तो बॉडी को यही लगेगा कि एक पोलिमेरिक चीज है जो मेरे अंदर आई है, एंड जनरली जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो मजीद कमजोर होता है बॉडी का अगेंस्ट थिंग्स which it identifies as something like itself. सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होती है कि जो एक नैनो पार्टिकल होता है उसकी सरफेस एनर्जी इज एक्सट्रीमली हाई, सो इफ आई एम गोइंग टू फॉर इंस्टेंस इंजेक्ट इट इन माय आर्म, वो रेडीली एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर, या जो से पहली अवेलेबल जगह मिलेगी वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन द फैक्ट दैट आई हैव इट कोटेड इन पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मेक्स श्योर कि मेरा पार्टिकल इज गोइंग टू फ्रीली फ्लो अराउंड when it is going to freely flow around in my body. जो ट्यूमर की बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका वैस्कुलेचर लीकी होता है। तो एक ट्यूमर it is a scary thing. A tumor develops a blood vessel system of its own. उसके अंदर जो चीजें कंज्यूम हो रही हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा है, वो न्यूट्रिशन भी ले रहा है आपकी बॉडी से, तो अपना एक उसने स्टेट विद इन स्टेट टाइप काम किया होता है। और एक बहरहाल प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज नॉट एज स्पेशलाइज्ड, तो जो वेसल्स होती हैं वो लीकी होती हैं, वहां से ब्लड लीक कर रहा होता है, वेस्ट लीक कर रहा होता है। तो अगर मैं किसी भी बॉडी के अंदर नैनो पार्टिकल सिस्टम इंजेक्ट कर दूं और उसको फ्लो अराउंड करने दूं, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम बिकॉज आई हैड लीकी वैस्कुलेचर उस ट्यूमर साइड के ऊपर, वहां पर जाकर मेरा ब्लड लीक करेगा और उसके अंदर जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो लीक करेंगे और उन कोटिंग की वजह से वो रेडिली अटैच हो जाएंगे उस ट्यूमर साइड पर, उस ट्यूमर पर। और मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, जो ट्यूमर्स होते हैं एज आई डिस्कस बिफोर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर एंटीजेंस होते हैं जिन पर बॉडी की एंटीबॉडीज को हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो अटैक करें। अगर हम ये नहीं भी करते तो हम अपने नैनो पार्टिकल्स को कोट कर सकते हैं ऐसी एंटीबॉडीज में जो एंटीबॉडीज खुद जाकर उन एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करें। तो अब वो जब रिएक्ट करेंगी तो मेरे जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके ऊपर जो ट्यूमर लोकेशन है उसके ऊपर मेरे पास कोटिंग हो जाएगी इन नैनो पार्टिकल्स की। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रेडिएट द सैंपल, आई एम गोइंग टू हैव एन एनहांस्ड इफेक्ट explicitly where those nanoparticles are, और बाकी सारी जगह स्पेयर हो जाती हैं। ये जो नैनो पार्टिकल सिस्टम मैंने बनाया था, इसकी फिर मैंने कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टराइजेशन में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली प्रिंसिपल्स यूज करती है कि मैं दो सैंपल्स लेता हूँ, वन इज अ कंट्रोल, द अदर इज द सैंपल व्हिच हैज माय नैनो पार्टिकल्स इन इट। अब एक लाइट बीम स्प्लिट होती है इन टू और वो पास होती है दोनों सैंपल्स के थ्रू, जिसके अंदर कुछ मौजूद है, इन माय केस नैनो पार्टिकल्स। इट इज गोइंग टू, द लाइट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद दोस पार्टिकल्स, और जो कंट्रोल होगा उसमें से इट्स गोइंग टू पास स्ट्रेट थ्रू। ये डिफरेंस इन जो भी सैंपल आपके पास होता है वो इस लाइट रे के अंदर से वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करता है। तो जो whatever that's coming out of these samples now is going to be different than what was shown on these samples, और इस difference को एक डिवाइस मेजर करती है और मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है जिसको मैं यूज करके कैरेक्टराइजेशन कर सकता हूँ अपने पार्टिकल्स की। इन माय केस आई हैड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन, तो वो मैंने इस तरह से की। अच्छा जी, then I also happen to work with cancer cells. ये
सेल लाइंस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, MDA और MCF. ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर जो MCF है विच इट इज़ अ ट्रिपल नेगेटिव कैंसर सेल, तो इसका रिस्पांस दूसरी ट्रीटमेंट्स को बहुत वीक होता है. और रेडियोथेरेपी, ये जो रेडियो एनहांसमेंट है, ये ख़ास तौर पर इस चीज़ को केटर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. जो वर्क फ्लो था वो ये था कि ASAP में ऑब्वियसली मैंने सारा काम किया था, और obviously supervision में किया था, rather मैंने बस observe most of it, because obviously working with cancer cells needs आपको काफ़ी उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, और कुछ ट्रेनिंग भी होती है. जो वर्क फ्लो था वो ऐसे था कि मैंने सबसे पहले अपने नैनो पार्टिकल्स को कैंसर सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया और चेक किया कि ये नैनो पार्टिकल्स मेरे कैंसर सेल्स को एज इट इज़ तो नहीं किल कर रहे. अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक आधे वो डैमेज सिर्फ उस विसिनिटी में प्रोवाइड करेंगे जिस विसिनिटी में वो खुद हैं, नॉट इन द सराउंडिंग. बट आई वांट कि सराउंडिंग्स में भी इफेक्ट हो. तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सेल्स नैनो पार्टिकल से डैमेज हो. मैं चाहता हूँ कि वो उसके बाद फॉलोइंग रेडिएशन ट्रीटमेंट से डैमेज हो. तो आई चेक्ड फॉर दैट, मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छा है. सो आई मूव्ड ऑन, और मैंने अपना नैनो पार्टिकल सिस्टम को अब प्रॉपर 6 वेल प्लेट, एक होती है पीट्री डिशेस का, 6 पीट्री डिश टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर मैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस डालता हूँ. वो कॉन्सेंट्रेशंस डाली टू चेक कि ऑब्वियसली किस कॉन्सेंट्रेशन पे मेरे पास सबसे अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. उसके बाद unfortunately the next two things I wasn't able to do courtesy COVID. मैंने बेसिकली शिफा इंटरनेशनल जाना था या CMH रावलपिंडी जाना था, और दोनों जगहों पर अभी भी और पहले भी कोविड का स्पाइक चल रहा था. बोथ ऑफ दीज प्लेसेस वर हेवीली बुक्ड, और इस किस्म का जो रिसर्च एक्टिविटी है वो यहाँ पर नहीं हो रही थी. बट if I would have been able to irradiate the sample, I would have seen कि मेरे पास एक कंट्रोल होता और एक सिस्टम ऐसा होता जिसमें मैंने नैनो पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए. मुझे नजर आ जाता मुझे कि जो सैंपल कंट्रोल था उसके अंदर कैंसर सेल डैमेज इतना अच्छा नहीं हुआ, और जिसमें नैनो पार्टिकल्स थे उसमें ज़्यादा हुआ है. और मैं किस तरह देख सकता, मैं ये DNA डैमेज स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, जिसके अंदर आप फिर अपने जो सैंपल होता है रेडिएटेड सैंपल, उसको यू पास इट थ्रू अ फ्यू स्टेप्स, और वहाँ से आपको पता चलता है कि मेरे पास कितने ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो वायबल हैं या जो लिविंग हैं अभी भी, और कितने हैं जो डेड हो गए हैं. तो आई कुड हैव देन मेड अ कंपैरिजन बिटवीन द टू which would have proved the hypothesis, well, which isn't a hypothesis, it is a fact. मेरा बस काम ये था कि मैं इसको एक तो रिक्रिएट करता, और दूसरा मैं इसके अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करता जिसमें मैं फिर नैनो पार्टिकल्स की डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करता. नैनो रॉड्स यूज़ किए जा सकते हैं, नैनो शीट्स यूज़ की जा सकती हैं. Unfortunately, none of that could happen because of the constraints. लेकिन this was my project. This is rather my project, or now I am going to welcome questions which I have been told कि मुझे Teams पर देखने को मिलेंगे. ताहा भाई एक क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे बिल्कुल ठीक है. थैंक यू अनीक. अच्छा जी, so probably this is where I'll find these questions. ये लोड किस लिए नहीं हो रही? हाँ, हो गए. अच्छा जी, so gladly I think 2 ही सवाल हैं, तो इनको मैं डिटेल में कोशिश करता हूँ आंसर करूँ. Obviously I am not an authority on the subject, so I'll answer them to the best of my knowledge, और अगर किसी को कोई ambiguity हो तो they can further extend this discussion. अभी या बाद में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so the first question is that
Well, I'll quote the question first. Though you mentioned the numerous advantages for gold to be used in radio enhancement, are there other similar and easily available nanoparticles to be used in radio enhancement? Well, nanoparticles तो आपके पास बिल्कुल available होते हैं और काफी ज़्यादा होते हैं. कई मेटल्स हैं जिनके होते हैं, सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स रादर इसी काम में यूज भी होते हैं. गोल्ड का जो एक एडवांटेज है वो ये है कि आपकी बॉडी जो होती है उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है. तो आप योर बॉडी हैज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ ट्रिगरिंग a full out war against any foreign particle that comes in. जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, it's supposed to do that. जो गोल्ड होता है however वो उतना रिएक्टिव नहीं होता. It is known to be लीस्ट साइटोटॉक्सिक मटेरियल एक बॉडी के लिए, तो इसलिए यूजुअली गोल्ड को ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यूज किए जा सकते हैं. मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि आयरन के ऑक्साइड्स इसी चीज के लिए यूज होते हैं, सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स भी यूज हो सकते हैं. इनके साथ हाउएवर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपको उतने ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते. तो सिमिलर नो, but easily available nanoparticles, yes, they are there, और उनको यूज भी किया जाता है रेडियो एनहांसमेंट टू अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की एप्लीकेशन. इसके अंदर ऐसा भी है कि मैं जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको I can engineer nano particles in different ways. So I can coat them with things. I can have a shell, a core of some other material, and I can I can have a core of a different material और उसके ऊपर मैं coating एक shell की किसी और material की भी कर सकता हूँ. All of these things, ये surface engineering, nanoparticle surface engineering एक बड़ी diverse सी field है, बड़ी मजे की field है जिसमें you do all sort of things to nanoparticles. और जो मकसद होता है इन चीज़ों का वो यही होता है कि आप एक desired effect लें. In our case, it's obviously going to be कि least cytotoxicity और maximum ionization. और gold हमें दोनों चीजें as it is provide कर सकता है. The next question is what is the benefit of using gold nanoparticles? Can any other? All right, so I hope मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है इसी पिछले क्वेश्चन के अंदर. दूसरे मटेरियल्स यूज हो सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो हमें इतने ही अच्छे रिजल्ट्स दें, और आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो गोल्ड से बेहतर होगा, बट इट इज मोस्ट डेफिनेटली कैन नॉट बी जस्ट अ मटेरियल जिसका हमने बड़ा सादा सा नैनो पार्टिकल बनाया हुआ है. इट मोस्ट डेफिनेटली हैज टू बी एन इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल जिसको हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें इंस्टिल की हैं हमने. The third question which we've just received is radio enhancement and the corresponding radiotherapy the most efficient technique for cancer therapy? Well, I cannot answer this. मेरा knowledge इस तरह से नहीं है कि ये आया बहुत सबसे ज़्यादा efficient technique है. It is, however, extremely effective. Or see the best. Well, a problem with cancer is कि you can't really have one treatment against it. तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कैंसर है और मैं कहूँ okay, chemotherapy is going to completely cure it, या radiotherapy is going to completely cure it. And I'm obviously talking about most cases. Most cases में ऐसा ही होता है कि कोई एक method sufficient नहीं होता. And since we have like a minute, I'll give a quick example. So for instance, कोई tumor है और for instance मैं उसको surgically remove कर देता हूँ. I'm still going to have वो जो tumor था, अगर वो malignant था, उसने surrounding tissues को भी invade किया होगा. उन tissues को जाहिर है मैं उस तरह से tumor के साथ नहीं remove कर सकता. So उनके लिए मुझे या कीमो करनी पड़ेगी या मुझे रेडियोथेरेपी परफॉर्म करनी पड़ेगी. और फॉर एग्जांपल आई हैव अ ट्यूमर बट इट इज लोकेटेड समवेयर वेरी स्ट्रेटेजिक, इफ दैट्स द राइट वर्ड. सो फॉर इंस्टेंस किसी के दिल के पीछे है, इस तरह से कि यू विल हैव टू एक्चुअली बहुत प्रिसाइजली रिमूव इट, वरना इट्स गोइंग टू कॉज डैमेज टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. सो व्हाट आई डू इज कि मैं उस ट्यूमर के अंदर उस ट्यूमर को first I'll target it with radiotherapy. I'm going to shrink the size of that tumor
I'm going to shrink it down to a point जहाँ पर वो इतना कम हो जाए अब कि मैं उसको remove कर सकता हूँ surgically. तो इस तरह combinations use होते हैं, and I can't really say कि जो radiotherapy है वो single most efficient technique है, लेकिन obviously hand in hand ये सारी techniques use होती हैं और कैंसर के खिलाफ काफ़ी सूदमंद साबित होती हैं. That is probably all from my side. If we do not have any other questions, Ani, take. That's it, Taha bhai. So as the Q&A session has been dealt with, so I'd like to thank you for giving us some of your precious time, for managing to give such an informative talk. I really enjoyed it, and I hope the audience would have enjoyed it too. It was very written in easy words, like a sophomore like me was easily able to understand the presentation. Before officially ending the event, I'd like to tell the audience that the links to our social media pages are pasted in the chat. Do check our Instagram pages, our YouTube page, and stay tuned, stay updated. And I'd like to tell that we have 2 more events coming. One of them is on May 7th and the other on May 10th. So do join these events, and the event is now officially over. Thank you once again. Thank you once again, Taha bhai. No worries, it was a pleasure.